layout manager. Now, before going to the other layout manager, we have to discuss about the swing component. The swing component is what? In a character user interface, a user needs to be remember all the command to work with the application. In character user interface, you have to remember the command. Then the user enter the command by using the keyboard and the application display the result of the command. A notification is displayed to the user if the user enter the wrong command. On the other hand, the GUI provide a graphical way of interacting with the application. The user provide an input most of the time by using the mouse and sometimes of keyboard by using the command line argument. The introduction of GUI made the application easier to learn and use. In addition, it is improved the navigation of appearance of the application. So now what happened? In swing component, ओके तो जावा का जो स्विंग कंपोनेंट है ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा ना, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये प्रोवाइड करेगा. इज कॉमनली यूज कंटेनर एंड कंपोनेंट इज यूज फॉर जे फ्रेम, जे डायलॉग, जे पैनल, जे टैब्ड पेन, जे मेनू बार, जे मेनू आइटम. सो हर एक कंपोनेंट से पहले ये जे ऐड करेगा. तो AWT में क्या है, हम डायरेक्टली फ्रेम ऐड करते थे, डायरेक्टली फ्रेम, डायरेक्टली डायलॉग. लेकिन स्विंग में क्या होगा ना, उससे आगे जे कमांड यहाँ पर यूज होगा. तो जे कॉम्बो बॉक्स, जे बटन, जे ऑप्शन पेन, सो दीज आर द स्विंग कमांड वी आर यूजिंग. So it works. So JFrame it work as a window to place the component of an application. Okay, so in AWT we are using normal frame. In the JFrame we are using JFrame. It work as a window. It is used to place the other component of an application. It contains the title, border, maximize, minimize option and close option. Okay, so it is just like that: minimize, maximize, and close option that we are using. There is a J frame. J dialog box is what? It is showing you confirmation message. Enter password. Do you want to delete? Okay, so it works as a dialog box that display the information to the user or output. तो इस तरह से आपको शो करेगा. Enter user name, एक pop-up box शो करेगा. This is a dialog box. Then J panel. Panel is a component of the frame. J panel, it is an intermediate component that is used to organize to a group and other component. उसके बाद है टैब पेन. टैब पेन क्या करेगा ना, नेविगेशन करेगा, एक विंडो से दूसरे विंडो को नेविगेट करेगा, वो होता है टैब्ड पेन. इफ यू वांट टू नेविगेट फ्रॉम वन पैनल टू द अनदर पैनल, तो टैब्ड पेन इज यूज्ड. जे मेनू बार. मेनू बार, so here the menu bar is used to add the menu. J menu, it is used to add the menu, and these are the menu item. Menu is file, edit and exit, and these are the menu item. J label, it is used to display the text or images. Okay, J label, first name, last name, it is display the text and images. And text field, it is used to insert or edit a single line text. For inserting a single line text, we are using the J text field. Text area, where we are writing or inserting the multiple line, J text area. J text box, it is used to display the state of something. If you want to use multiple value, check box, और multiple item आपको use करने, check box यहाँ पर use करेंगे.
A radio button, you have to choose only one option between the two options, like male, female. Okay, so it is used to accept only one value from the predefined set of operation. List blocks kya hai na, it is used to provide a list of items that enable the user to select one or more item from them. So at a time you have to, it is providing you the lot of list, and in between the list you have to select multiple value here. That is a J list. J combo box, it is used to display the combination of the text field and drop down list. Okay, it is a combo box. Combo box means drop down list. J button, it is used to provide a clickable functionality. If you want to submit the button or submit the information permanently, J buttons are used. J option pane, this confirmation message. Do you want to save it? Okay, and cancel. Okay, so these are the swing component we're using. Next, I move to the layout manager. See that here we're using to place the component on the required position once you have created the user interface. So once you have created the user interface, it is important to arrange them properly to enhance the look and feel of the application. To arrange the component in a container, you can use the various layout component. Okay, so to give a layout, तो जो component ऐड करने के बाद अगर कुछ एप्लीकेशन हम यूज करेंगे तो हम लेआउट मैनेजर यूज करेंगे, फ्लो लेआउट एंड बॉर्डर लेआउट. This layout use the relative position to place the component on the container. The set layout method is used to state the layout of the container. The sum of the layout manager classes are: one is flow layout, border layout, grid layout, Gridbag, box, and group layout. So these are the different layout manager we are using. So flow layout place the component in a sequence, one after another component in a row. By default, the component are aligned in the center and placed from left to right and top to bottom. So when you add the component, it is added into the left to right and top to bottom. It is using a flow layout. The orientation of the component can be changed by using the set component orientation method. The set component orientation method can be accept the following values, like left to right approach and right to left approach. See that. Now I just comes to the grid layout is over, then grid bag layout. ग्रिड बैग लेआउट आपको क्या बोलता है ना, ग्रिड लेआउट में आपको रो एंड कॉलम फॉर्मेट में शो करता है. ग्रिड बैग लेआउट क्या करेगा ना, इट प्लेस द कंपोनेंट in a grid of row and column, allowing the specified component to span in the multiple row and column. Span means giving a space.
The place component within the cell of grid uses the component for preferred sizes. So we are giving a preferred sizes to them. Gridbag layout class provide a gridbag layout constructor where you can give the functionality. Gridbag layout is associated with the gridbag constraint. Constraint means you are giving some kind of rule. ओके तो ये जो ग्रिड बैग लेआउट में क्या होगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्मेट में आपका वैल्यू शो करेगा. ग्रिड बैग कांस्टेंट में हम इसको क्या करेंगे ना, उसमें कुछ नया फंक्शनलिटी जैसे कि टेक्स्ट का साइज पास करेंगे, कलर, ये सारा चीज देंगे. तो इट इज कंसिडर एज अ ईच कंपोनेंट मिनिमम एंड प्रीफर्ड साइज टू प्लेस देम. ओके, सम ऑफ द कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस रूल. कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो कंपोनेंट आप ऐड करोगे तो कौन सा पोजीशन में आप ऐड करोगे, तो वहां पर वो कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे. जैसे कि हो गया ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई, फील, anchor, grid width, grid height, weight x and weight y. So these are the constraint we are using. Okay, the constant we are using to store in the required position. Now see the program, then you understand. Program ta dekla ami buझी pariba. Grid bag layout actually work ta kaun. First मैं इसका आउटपुट शो करता हूँ.
Okay, so this is a Gridbag layout example. This one, name, comments, and submit button. Okay, so now I explain this program. Okay, the first आम एठी कौन डिफाइन कले ना लेबल गोटे रहिला तो लेबल हैला नेम तापर टेक्स्ट फील्ड रहिला टेक्स्ट फील्ड आम डिफाइन कले लेबल साइड रे ये 10 कैरेक्टर आम स्टोर कर परिबा तापर आम एठी यूज कले कोन ना कमेंट्स लेबल लेबल ऑब्जेक्ट एटा हैला तारा ऑब्जेक्ट तो एठी आम डिफाइन कले कमेंट्स द नेम इज कमेंट्स तो व्हिच इज ए व्हाट द साइड रे कोन रहिला टेक्स्ट एरिया एटा होची सिंपल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया रे कोन रहिला 6 रो अब 15 कॉलम तो एमती ए हिसाब से जदी जीवा 15 कॉलम एमती हिसाब से जीवा 6 रो तो 6 रो एंड 15 कॉलम तापर हैला बटन न्यू बटन सबमिट बटन एटे रहला तापर हमें यूज करिवा सेट लेआउट न्यू ग्रिड बैग लेआउट एटे डिफाइन करिवा ओके सो लेआउट मैनेजर दवा पे हमें नॉर्मली यूज करू छ जेंति फ्लो लेआउट ग्रिड लेआउट एटी यूज कले हमें ग्रिड बैग लेआउट हमें यूज कले तापर हमें यूज कले ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट जीसी इक्वल्स टू न्यू ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट तो कंस्ट्रेंट मींस हमें जो लेबल जो टेक्स्ट फील्ड सब रहिला ताको को पोजीशन में ऐड करिवा 001100 तो टेक्स्ट नेम लेबल कमेंट्स माने ता को जगह में एठी ऐड कले कमेंट्स एठी शो करिवो देन टेक्स्ट कमेंट टेक्स्ट एरिया कमेंट्स ओके देन बटन सबमिट ऑप्शन हमें एठी यूज करबे एटा होची तार पोजीशन 0 पोजीशन माने फर्स्ट 1 पोजीशन माने टेक्स्ट नेम रो एठी रहला 1 पोजीशन सेमती 0 पोजीशन माने एठी कमेंट्स एठी रहला 1 पोजीशन माने ए जगह रहला सबमिट बटन ता तळे रहला ओके तापरे हमें यूज करिवा कोन void add हम एठी यूज करले component cmp grid constant gc intx inty intw inth intwx intwy सो ये जो वैल्यू गुडा का सब रहिला 000110 को इनिशियलाइजेशन सब ए जगह रे कराला x y width w height wx wy एठी सब हमर ऐड कराला तापर मो यूज कली कोन ना ग्रिड बैग लेआउट फ्रेम एठी फ्रेम ऑब्जेक्ट बनैली न्यू ग्रिड बैग लेआउट के तार एठी ऑब्जेक्ट बनैली तो फ्रेम डॉट सेट टाइटल त मो फ्रेम रो टाइटल देली ग्रिड बैग लेआउट इन जावा एग्जांपल तर जो फ्रेम टा ओपन हला एटा रहला ग्रिड बैग लेआउट जावा एग्जांपल एटा रहला फ्रेम डॉट सेट साइज 300 and 200 the size मुझे तरा देवी the size एटी शो कला 300 and 100 एटी शो कला the frame टा एटी visible हला frame dot set visible to true एटा हला ग्रिड बैग कांस्टेंट रो एग्जांपल सेमते हमें आ गोटे पढिबा देखो
हेलो सर। हाँ बिरु को सर से सेम एग्जाम बोले जो देखिले बेसिला जो पॉइंट नेलाटे आ सेला बुझे दे सेई बात। सेम एग्जाम आज्ञा देखो कोडी बुझिलानी को तो स्क्रीन मुझे विजुअल देखा जाउनी देखा वाला स्क्रीन बिरु देखा होची देखा वाला स्क्रीन देखा वाला आज्ञा सर। सर से जो निया ऐड करा जो पॉइंट सब जो आपन कहले जो सब माने टेक्स्ट रो आ लेबल माने नेम रो आ जो ये करा अब टेक्स्ट सब जो पॉइंट जो ग्रिड रे रहइबो से पॉइंट आडी बुझे देबे जो सब पॉइंट सब निया 001 110 से पॉइंट जाबो। अच्छा गोटे मिनट देखो जीरो माने होची कोन बिगिनिंग बुझिला आज्ञा सर। लेबल टाइट नेम टाइला लेबल एटी देखेला तापर हमें यूज कला टेक्स्ट नेम सेठी वन पोजीशन ऐड हैला तापर हमें एटी लेबल कमेंट कमेंट एटी ऐड करले ता पोजीशन टा कोडी यूज कला एटी जीरो ऐड हैला बुझिला तापर ऐड आज्ञा टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट तापर वन एंड वन पोजीशन एटी शो कला बुझिला सर से पोजीशन वैल्यू सब हम केम कोन जानबो एबे एटा तुमे जानिबा दरकार नै एटा खाली तुमको एटा देखाउ जे एग्जांपल तुमे जे तो रियली तुमे करिवो ना प्रोग्राम तुमे ड्रैग एंड ड्रॉप रे करिवो ए पोजीशन देखे दरकार नै खाली तुमे जानि था प्रोग्राम अछि बुझि पाइलो हेलो ये जो पोजीशन सुबुजी तो बिरु ये जो पोजीशन गुडा को तमे खाली जानिबा दरकार जे को पोजीशन ता कोन पे रहउची किंतु तुमे जते बे रियली प्रोग्राम करिवो नेटबिन ने एटा दरकार पड़िबो जे तम पे ऑटोमेटिक ऐड हे जिवो बुझि पाइलो ठीक है तापर देखो बॉक्स लेआउट बॉक्स लेआउट रे कोन आसीबो ना एटे ऑटोमेटिक हमर कंपोनेंट ता आइदर एक्स एक्सिस किबा वाई एक्सिस रे ऐड हबो लाइन एक्सिस पेज एक्सिस रे ऐड हबो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस
लाइन एक्सिस पेज एक्सिस का हमर एटी ऐड कराबो ओके सो एटा होची हमें कोन ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हमर इंफॉर्मेशन गुडा हमर शो करियो होची बॉक्स लेआउट रे तापर ग्रुप लेआउट रे कोन आसीबो ना ग्रुप लेआउट इज यूज्ड टू ग्रुप द various user interface in a sequential or parallel sequentially store करिवो न parallel store करिवो दीटा बरे शो करिवो sequential न parallel ए दीटा होची हमरो ग्रुप लेआउट रे देखिबो एबे बॉक्स लेआउट एग्जांपल देखिबा